The Indian government suggests that the Modi administration is all set to announce a significant cut in petrol and diesel prices for all Indians. The Finance Ministry is awaiting a final nod from the PMO to cut retail prices of petrol and diesel. Namaste. We are all hearing the buzz nowadays. We could be enjoying lower fuel prices at the pump very soon. This would be a gift from the government to all Indians. But let me just refresh something which you may not have figured out. Since the last 2 years, all of us have been spared from any inflation on account of fuel. आप शायद जानते होंगे 2022 में जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, many prices of world commodities, fuels, food grains, fertilizer, metals, a lot of it went up. But when this happened, you and I, we were spared. We didn't find prices rocketing for our petrol and diesel in India. Let me tell you the story behind that. While Prime Minister Modi was a dear friend of the United States, being the very welcome guest at its state dinner last year, तहे दिल से अमेरिका ने मोदी जी और इंडियन कंटिंजेंट का स्वागत समारोह किया. बहुत ही बढ़िया शाम की जश्न हुई. इस सब को देख के आपको लगा होगा कि अमेरिका के साथ ही इंडिया फुली अलाइंड है सारे पॉलिसी में, इंडो पैसिफिक जो क्वाड अलायंस है उसमें भी. बट यू ऑल्सो मे नॉट अप्रिशिएट, ये सब के चलते द मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो इंश्योर्ड कि वॉर टाइम के फ्यूल प्राइस आप और मुझे हानि ना पहुंचाए. सो व्हाट इट डिड, इट एंटर्ड इनटू अरेंजमेंट्स विद रशियन एक्सपोर्टिंग कंपनीज. रशिया से इंडिया ने पिछले 2 सालों में कम से कम ऑन एवरेज 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल बचाया. जब यूएस और नेटो अलायंस ने रशियन ऑयल और गैस एक्सपोर्ट बैन किया, इंडिया कंटिन्यूड टू बाय वेरी इकोनॉमिकली प्राइस्ड रशियन ऑयल. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. Tankers were banned from carrying Russian goods. Marine insurance was not available for Russian cargoes. All these challenges were overcome. जब सारे देश ग्लोबल इन्फ्लेशन से जूझ रहे थे, तो मोदी जी ने टीम को दिशा दिखाई कि डिप्लोमेसी के साथ साथ देश का हित दोनों बरकरार रखिए. That is how you and I have benefited from lower inflation. Same pump prices for our fuels. This degree of diplomacy with a strong and stable government of Modi ji could develop with such strong nations was because, as they say, diplomacy sits on the massive shoulders and pumping thighs of strength. Only Modi ji could manage this balance between two superpowers. Namaste.